Hello, Mike. Hi. Mm-hmm. Okay. Okay. Thank you very much. So this is your make account where I built all the scenarios. Just let me know if you can't hear me very well. No, we can hear you. Go ahead. Yes. Okay. So it's been long I logged into the account, so I'm trying to find the right workflow. Okay. Yeah, I think it's this one. Yeah, it's Become Parents would be my company, so that's definitely on. Yeah, I'm on the right account, I know. Okay, so I think it's this scenario. So, like I already explained this part to you before. So this is your workflow. I think this is the Mm-hmm. part of posting to the Facebook, yeah, to the social media accounts. This is not the first part. This is for social media. I think the Okay. first is one for WordPress for the blog post. For the blog one, yes. Mhm. Yeah, I think this is it. Yeah, so this is the one for the blog. Okay, Yeah, it's so just give me a minute. It's sorry, it's been long I logged into this account. sure. So I'm trying to remember what I even did. Okay, yeah. So before this SEO, data for SEO is used to search for keywords for topic that we're going to post on the WordPress blog post. So this scenario was separate before, but Okay. you asked me to add it to in a single scenario, in a single workflow. That's why it's now with the WordPress scenario. So what this does now is this one, it searches for keyword ideas. It searches for let me just run it together without posting. You can see my screen very well, right? Yes, we can see your Yes, screen. right. Yeah, so I'll just run it real quick. So what this does now is this one searches for keywords ideas. So we have tax, okay, jobs. So IV Dubai fatality fertility clinic Dubai and Right. so on. So it just generates a bunch of keywords. And this Okay. one, those keywords now were like in an array. So I added an iterator in front of it to split those keywords into, you can see, we have about 50. We have about 50. So now there's a filter here that now, because Yes. those keywords, their competition level is either high or medium or low. So I made a filter to only accept it if the competitive level is either medium or high. We don't want any low Okay. competitive, so either low Mm-hmm. or medium or high. So I think among the 50, there's only about two of them that meet that criteria. Okay. So Yeah. basically, we are using a filter for medium and high range of keywords, right? Yes, exactly. Okay. Mike, just one second. So, data for SEO has given us the suggestions for keyword. And then this Yes. Yes. iterator, the second one here, this iterator is filtering them on the basis of The high, keywords. medium, Yeah.
level difficulty. That's it, right? Yeah. Okay. Yes, yes, you're right. Okay, and So just one more sec, now, one more second. Now, before even the okay. data for SEO has got the keyword suggestion, I believe, are we including the Google Sheet as well? Because from Google Sheet is something which is going into data for SEO, right? I mean, that's how it's being fed into that. The one here, these two. No, no, no. It's not. It's from the keywords that we're now going to add to the Google Sheets. Okay, but how does Like data for SEO come basically to he is know? asking, Mm. yeah, how we are choosing the keywords. How does the data for SEO come to know the keywords? Are we have to do that manually? Do we have to fill that manually? How does that work? Just give me a minute. Sure. I need to check if I have access to the Google Sheet because the keyword I added here were actually manual, were just manual. So you can see it here. I just added. But if you want that to be automatic, because what I did initially was adding keywords manually. I just I added the see. keywords here. Okay, so Can you let's do see? that manually for now. Later on, we can add that Hmm. automation, but for now, let's take it that you've done it manually. That's great. It's gone into an Okay. iterator. It is separating the high and the medium difficulty keywords. Now, please take it further. Okay. So now this text aggregator now picks those two keywords that were high, that were either high or medium. It now like Okay. picks them together. Also, we have hospital in international city and IV process for pregnancy. Then this open AI, based on the keywords, it now generates title, Yeah, slug, meta. Yeah. meta title, meta description, and outline for the blog post. You get what I'm saying, right? Okay. Yes. So it generates for the blog post, like the blog post details, the description, and all of that. Hmm. Do you understand that? Yes. Yes, yes, sure. So let me see what this. So basically, what this other iterator is for is because these these results, I actually told it to also generate image prompts. So you can see it generated four image prompts because we are going to be generating the image also using AI. Okay. Okay. So that's why I told it to generate at least four image prompts for each blog post that is writing. So that's why we have four image prompts here. Then the iterator now splits that into four, and then it generates images based on those four um prompts. So I'll just show you the images because it has not generated the images finished before I stop the scenario. So these are two images that it already generated. So Mike, how do it choose the placement of images between the blocks? That's going to be handled with the HTML formats with this other AI. So this is the AI that is going to handle the placement of the images. This AI. Okay. Can you see what I'm opening up? So you can see the image. It was one of the images that were generated, right? So this is one of the images that is going to be used in the blog post. Oh, sorry. Let me share my screen back. So can you give me a minute? I want to reply something. Just Sure. give me a minute. Sure. Okay, sorry, I'm back now.
Sure. Okay. So, I already told you. Do you see the image I showed you? Or I need to open it again. Let me just show you the second image Sure. that was Okay. generated. So, this is the second image that was generated. So you can see it was different from the first image that was generated, and it's not even looking AI like that. So it's going to be hard to even know that okay, this was AI generated. And then the next thing is now it combines the image together and give those images the image link because it's the link we need, the link to Hmm. the image. So it now aggregates those images together and then give it to this open AI, this Okay. ChatGPT, with both the description and the images. So this ChatGPT now writes the whole content. It writes the whole content, formats it very well before now posting to WordPress. Do you understand? Okay. So now once it posts to WordPress, it's I think I already showed the final results to I already showed him the final results. Could you show once again, please? Could you please, if you don't mind, show that once again to Shubangi as well? Yeah, I'll need to look for the login because it's been long I checked for that login. Yeah. Just give me a minute. Yeah, I think I found it. Okay. Thank you. So, Mike, are you using some kind of plugin or anything for WordPress, right? To connect the WordPress with your model? Yes, yes, yes. You use a plugin. You just need to. It's not the connection for WordPress to make is not that hard. Mm, So you install Make Connector. You can see here. I installed Make Yes, yes. Connector. Then Yeah, you once have I load. checked, yeah, there are many plugins for that, no? Exactly. So that's not an issue. So let me just check the current posts because I did a lot of testing. Mm, just okay, yeah. So I think this is one of the tests. So these are the images, the way they are placed. And we add this. I was asked to add this to the end of the Yes, about the Shubhangi. author. So I requested Mike to add like the About the bottom other line, part. the author part, the tags, and later on, Shubhangi, you can add to that. Like I mean, he's added the clinic tag. We can add like IVF in Dubai, etc., etc. All the tags that are Hmm. important from an SEO perspective, right? But this is how it comes out. So if you look at the formatting, it looks like a typical blog which has been written by an individual. Obviously, I don't know whether you can look at this and say what is lacking, what is not lacking, like the paragraph length should be more or the images. But Hmm. I think personally, from my perspective, I'm not an expert. To me, it looks okay, but obviously, you would have a better idea. Yes. I also need to look for the text also, na? What kind Mhm. of text is this posting and all? Yep. But I'm sure, I will Shubhangi, you check. you Yeah. can you can check, right? You can have a look at the WordPress Hmm. with the plugin and all that. Yeah, but this is the thing that Mike has created. Obviously, now Okay. with once we perfect this, then we'll go on to the other things wherein we look at automation of other tools that I'm using. I'm going to be discussing with you, Shubhangi, later on in terms of Hmm. link posting, etc. But Mike, have you worked on anything with link posting, that kind of thing, automation as well? Is that something that you can also help us with?
What is that? Sorry, I didn't get your question. I'm asking, apart from the, I mean, this is one of the components of SEO, which is blogging and writing content about the website and about the doctor, about the business. But there's also another Yeah. component about link posting, backlink posting, for example. Is that something that you can also help us with automation when it comes to automation? Yes, yes, yes. I can help you with that. Okay, so we will try and go for that one. And also the same thing, I believe you've also given us a version where the same thing can get posted on social media automatically as well, right? Yes, The same thing? yes, yes, yes. Okay, good. So this blog, Shivangi, you clear with that, the way it has come about? It's okay? Yes, yes. Hmm. Wonderful. If you could just, Mike, quickly take us to the social media post as well, that'll be great. And then, we can come to the next part about the backlink posting, and then we can assign you that task of, going ahead with that one as well. Okay, give me a minute. Let me quickly do that. So, Mike, I have a question. When we are using this model, so is it able to automatically post the meta description title with full block text and images, right? Yes, yes. Okay. So in backend, meta title and description is also updated. Let me just the make meta tag, right? Yes, Sorry, what she's asking is that automatically this tool will post in the background the meta tags and the headers, etc. Is that what you're asking, Shibangi? yes, Yes, yes. yes. It will pull that automatically. Okay, okay, thanks. Mm, mm. Yeah. So this is one for the Facebook and Okay, good. Instagram. Yeah, I think you'll have to change the screen and show us that one, please, because Oh, we can still see the blog. Yeah, sorry. Yeah, good. This one is for so the social media, Shibangi. yes, Okay. yes, social media. So every time a blog post is created, it gets added to a Google Sheet, right? With the status ready, the topic, the keyword, secondary keyword, the audience, and all of these details. Hmm. So the way this one now starts is it picks those details. That's why I started with the Google Sheet. It picks those details from the Google Sheet. Then based on those details, it now generates Facebook content. I think this for yeah. So and then it generates a prompt also for generating the image. So this one Okay. now generates the image. It uploads here to get a link, like a public Hmm. link. Then we now post it to our Facebook page and also Instagram page. But yeah, this connected to my Instagram, my Facebook and Instagram account currently. Okay. Could So I you had could you not just connected it. Mike, if you don't mind, could you just show us one from your page and you can delete that later? But I just want to show Shibangi how it looks like the paste. I'm sorry, the post. I don't know if I already deleted it. Maybe you have to run the scenario once, maybe.
Yeah, I'll run it again if I don't see Yep. any post. Okay, so I think this is one of the posts. Okay. The image and the for Facebook though. Starting your Okay. IV. How does it look, Shibangi? This is pretty good, right? I mean, we have to obviously And fine tune Yeah, that. right. and it Hmm. also adds the link to the blog blog post as well. WordPress sites where they can click on it to like get more details. So read more Very And good. Mike, about if we want to add some text in the image, we you want me to add text to the image. yeah, actually a line or something, is it possible? It's possible. It's possible. It's just that most cases the text are not usually aligned. Okay. I think we'll have to manually first do that. Later on, we can introduce this automation. For now, I think this is good enough to start off with. So this is it. Okay. Same thing goes with Instagram as well. Very similar kind of post will come on Instagram as well. Hmm. Okay, so that's great. And I guess, Mike, are you able to give us a demo of how you work on the backlinks as well? How that automation works? I mean, I'm sure you've done it for someone else. Are you able to show us or give us a demo of the backlinks automation as well? Yeah, I've done it, but I don't have access to the account currently. Let me check. Give me a minute. Sure, sure. Well, I don't think I have access. Sorry, please give me a minute. Sure.
Okay, so I don't think I have access to the WordPress account again. Okay, but could you describe then what does that automation tool do? Then obviously we'll start. Isn't it Shubhangi? That we can explore getting that made as well Like and see if how that. this process works. Yeah. Yes. Could you explain that to us, please? Okay, sorry, I need a minute, please. Very well. Mute. कौन है ये? So So, yeah, so so when the way I actually did it for the other person, actually doing backlink automation is not just does not just require one step actually. It requires like lot of steps. So we'll be needing multiple scenarios for this. Like we would have a lot of scenarios for this. So the first one we do is identifying the relevant websites, like websites that are relevant your to what you do, like the health and all of that. Are you getting me? Are you getting what I'm saying? not really, not really. We're not able to understand because see, the thing is, if you could give us a demo, maybe not today, maybe in a couple of days' time, on how this automation works for backlinks mainly, specifically, if you could explain that to us, then possibly we can look at employing you for that, developing that part as well. But I just want to see how it looks like. I've never heard of anyone doing it, but I'm sure you've done it. So if it has worked in the Okay, past, I'm sure we can take advantage of that as well. okay, I can create a demo. When else would you have time for the call like this? Maybe in a So couple of days' time, is that okay with everyone? We can meet up in 2 days' time. Yeah, yeah. Sure. Okay, okay, no sounds problem then. I will create a demo that we can just use. Do I'll see how I'll do it because most of the platforms do need that are sure. mostly paid. I'll find a way around that. Don't worry. Okay. And any other thing that you feel can help us in SEO automation using make.com? Anything else that you can think of? Do suggest that to me. We will look at incorporating that and getting that developed as well from you. The thing is, I actually do SEO optimization separately, not really with not really with make automation because I do backlinks, but there are also like normal, you can employ someone to help you with your SEO optimization. I'm even currently working with someone that we do it monthly. It's just that most of those SEO optimization like takes time to actually have effects to become effective. That's why most some people now suggest using backlinks because it's more like posting your website link on other people's websites. That's actually what backlink is all about. So it's just Sure, like giving your website like more trust and credibility. sure, sure. So SEO, if you want to if you want to increase your SEO, you can also look for someone. I do it, but you can look for someone that will help you like mainly with SEO optimization. Though the payment is usually monthly and it takes time before it becomes effective. But once it's effective, it's very good. Okay.
Look, I mean, for now, let's do one thing. We'll wait for your message when you get me the backlink thing working. Can you, if you can demo that to us in 2 days' time, that'll be great. In the meanwhile, please allow us to digest the information that you've told us today. And if we eventually, we will come back to you with adding more modules, more automation, more refinement. We'll keep on building this. And yeah, that's about it. For now, I think that's good enough for us. Okay, no problem. That's good. Thank you, Mike. Thanks a lot. Thank you, You're Mike. welcome. Thank you. Thank you. Yeah. Bye bye. Have a nice day. You too. Bye. Okay, everyone. जाना Uh, uh, या मुझे तो आधा मुझे मतलब उसका एक्सेंट मुझे समझ नहीं आ रहा था बहुत मुझे बहुत वो अच्छा करने में ना बना टाइम लग रहा था it ज्यादा takes a कुछ नहीं while समझ to में आ get रहा है। used to it. सिर्फ इन्हीं को समझ में आ रहा था सब धीरे धीरे it takes 5 मिनट के बाद धीरे धीरे your brain starts tuning की उसके accents उसका ये सारी चीजें. By the time you understand, the demo is over. Yeah, I mean, see, नहीं कुछ कुछ luckily, तो एकदम क्लियरली समझ में आ रहा था बट फिर कुछ कुछ जब वो हाँ, थोड़ा ऐसे लॉन्ग सेंटेंस में कुछ बोल रहा था ना वो थोड़ा नहीं लकीली एकदम से शुभांगी कैच को हो रहा आइडिया था है. हाँ, लकीली शुभांगी को आइडिया है ना, तो अदरवाइज इट वाज फॉर अ न्यू कमर इट इज वेरी डिफिकल्ट. बट एनीवे, आई हैव रिकॉर्डेड एवरीथिंग. तो हाँ जनरली क्या होगा, शुभांगी, आई वांट यू टू स्टार्ट प्लेइंग विद दिस थिंग. ओके, इसकी कॉपी बना के स्टार्ट प्लेइंग विद इट. इट्स अ ग्रेट टूल. आप देखना जाके ब्लॉग कितने अच्छे लिखे हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन, हम्म हेडिंग्स, इमेजेस कितने अच्छे आए हैं. उसको ऑब्वियसली हमको थोड़ा फाइन ट्यून करना पड़ेगा. उसको हमको थोड़ा विल हैव टू कस्टमाइज दैट लिटिल बिट. बट ओवरऑल आई थिंक इट्स वेरी हम्म प्रॉमिसिंग. इट्स अ गुड स्टार्ट. उसको हम बाद में फिर वी कैन लाइक आप आस्क. जो डॉक्टर श्रीलता को भेजते थे ना इमेजेस वो हम्म. भी आप भी एआई से जनरेट करते थे बट वो बहुत रियलिस्टिक लगती थी लेकिन अभी जो माइक यूज कर रहा है इमेजेस वो इमेजेस ना बहुत रियलिस्टिक नहीं लग रही है वो बहुत ज्यादा एआई जनरेटेड लग रही है तो नो तो उसका हमें कहीं ना मतलब सो हमें सी रिजेक्शन फील कर हो सकता है नो सो इन दैट केस देन देखो, अभी जब तक हम उसको उसमें परफेक्शन नहीं लाते, हम तो इमेज जनरेट करके उसमें ब्लॉग में डाल सकते हैं ना. वी नीड टू करेक्ट द प्रॉम्प्ट ओनली मुझे लगता है सिर्फ अच्छा. Prompt प्रॉम्प्ट का correct, ही मैं भी खेल यही है बोलने वाली थी। हाँ Prompt main है, हम दोनों बगल में बैठे रहेंगे, हम अलग अलग prompt देंगे एक ही चीज का और दो अलग चीजें बनेंगी। तो I हाँ think इसमें पूरा वही जो game ही आप prompt का जनरेट होता कर है। रहे थे हाँ वही मैं भी कह रही हूँ कि जो आप जनरेट कर रहे थे वो इमेजेस एक बहुत ही अलग टाइप की कुछ मीनिंगफुल जैसे आप जो उनको भेजते थे डॉक्टर को जो उनको भी बहुत पसंद आई थी अंडरस्टूड. हाँ, इट इज अबाउट जस्ट द प्रॉम्प्ट, राइट? राइटिंग द राइट, रिफाइनिंग द प्रॉम्प्ट. ओके, हम्म ठीक है शिवांगी, जस्ट Defining the टेक योर prompt. टाइम. नाउ यू गॉट एक्सेस टू make.com. थोड़ा उसमें आप जरा रिसर्च करो कैसा लग रहा है. एंड ठीक है, हम्म उसके बाद ना फिर मैं काम करूंगा. मेरे जो बाकी के 3 वेबसाइट्स है वो भी यू स्टार्ट लुकिंग एट दैट. जो बिकम पेरेंट्स है, हम्म बैंक ऑफ सरोगेसी है, और एक और है, उसको भी यू स्टार्ट लुकिंग एट दैट. फिर बेसिकली देखो, इसने तो आईवीएफ श्रीलता को किया हुआ है. फिर हमको सिर्फ स्विच ही करना है उसमें ब्लॉगिंग का कंटिन्यूअसली. मेनली आपको बैकलिंक का करना है, वो है. उसके हम्म अलावा देन आई ऑल्सो वांट टू नो, बिकॉज सी देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज जो मुझे, मैंने किसी को पूछा था कि जैसे बिकम पेरेंट्स को इवैल्यूएट करो, उसने टेक्निकली काफी चीज बताई थी जो उसमें डेफिशिएंट थी. हम्म डेफिशिएंसी थी उसमें, आइडेंटिफाई की थी उसने. सो आई वांट टू नो कि वेदर, आई एम श्योर, देखो हर एक किसी थर्ड पर्सन के पास जाओ तो वो हमेशा दूसरे का काम गलत ही बोलेगा कि ऐसा है वैसा है इस तरह करके. हम्म बट हो सकता है एक दो उसमें जेन्युइन चीज भी होंगी. सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी टेक द फीडबैक. एंड आई, इफ यू वांट, और आई ऐड. हाँ. एसईओ में ये चीज होती है कि मतलब आप दो चीज करेक्ट भी कर दोगे ना हो सकता है कि वो चीज सही ना हो मतलब और कई कोई चीज ऐसी होती है जो क्लिक करने के बाद ऐसा होता है कि आपका टेक्स्ट एकदम बूम पे चला गया कि बहुत अच्छा हो गया वहीं से लिंक बिल्डिंग बहुत अच्छी हो गई तो ये ना थोड़ा डाइसी चीजें होती है इसमें कि आपने हाँ अपनी तरफ से सब कर लिया लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती है जो रह जाती है अंडरस्टूड. ठीक है. सो गूगल की जो एल्गोरिदम है बहुत अलग तरीके से काम करती है अच्छा, ठीक है, तो एक काम करेंगे. व्हाट वील डू इज वील I just let you absorb this information in a day or two. जरा please play हम्म with it. You have the login, you have the blog, you have the WordPress and all that. वो वेबसाइट आपने बहुत अच्छी बनाई डॉक्टर श्रीलता की, by the way, that's good. उसके बाद I बस spoke to प्रॉब्लम डॉक्टर. मुझे ये हो रही थी वो ब्लॉग लिख रहा उसने जो ब्लॉग दिखाया यार अंकिता तुम ब्लॉग देखते हो तो मुझे इरिटेशन हो रही है वो ब्लॉग देख के उसका ना साइड बार आ रहा है ना कुछ आ रहा है नीचे से पूरा टेक्स्ट मिला हुआ है मैं कह रहा हूँ शिट यार ये ऐसा क्यों आ गुस्सा रहा आता है देख के जब चीजें प्रॉपर ना हो। है वो प्रॉब्लम उसको टेक्स्ट से ज्यादा ना उसको देखने में हो रही थी उसके लेआउट को क्यों कैसे हाँ, आ रहा है
but you can refine that, right? ना? You can kind of columns कितने बनाना, क्या करना, वो सारी चीजें. I mean, see, हाँ, वो इसमें नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों इसमें इस वेबसाइट में, उसमें तो ठीक है, मेरे एवरीथिंग इन कंट्रोल, उसमें तो मैंने ऐसे ही बनाया है। आप ब्लॉग सेक्शन भी देखोगे ना, मेरे को ये था यार कि मैं मैनुअली इतने सारे ब्लॉग इंपोर्ट करूँ, एक बार डेवलपर की हेल्प लग जाती तो मैं उससे ये पूछ सकती थी कि मुझे पूरा का पूरा ब्लॉग ना इधर इंपोर्ट करना है, इस साइड, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? अगर नहीं कर सकती तो मैं मैनुअली करती हूँ फिर सबको, वो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, मतलब ब्लॉग सेक्शन भी इंपोर्ट करना होगा ना उनको पूरा, जो अभी तक पोस्ट कर रखे हैं। तो आप you're working on that right now? नहीं, वो थोड़ी-सी बात बस डेवलपर पे अटकी हुई है। वो ना किस कुछ पे? कंफर्म नहीं कर रहा है सटीक, क्योंकि अभी उसका अपना काम भी है, कुछ ऐसे-तैसे करके आपको उसके बात तो ऊपर हमारी भी बहुत दिन काफ़ी से वर्क चल चल रही रहा है, है। हाँ, बात तो बट चल रही है, थोड़ा-सा बट वही। उसने कंफर्मेशन नहीं दिया है अभी तो कि से, करेगा, नहीं सेफ से करेगा। ले मैं लो, तो कह रही हूँ सेफ कि से ले लो ना, सेफ से कर लो. सैफ इज़ नॉट अ डेवलपर, ही इज़ नॉट अ डेवलपर। नो, वो डेवलपर नहीं है। वो भी किसी से कराता था, मतलब वो भी खन्ना से पूछ के करता था। प्रॉब्ली टेक खन्ना इफ प्रतीक से आज एक फाइनल बात कर लेते हैं, लास्ट हाँ या ना, और फिर करके टेक हुँ। खन्ना की हेल्प ले लो, वो कर देगा। ठीक है ना, उसको प्लीज फाइनल कर लो, क्योंकि मेरी वेबसाइट्स भी मैं हैंड ओवर करूंगा. प्लस सी वी विल ऐड मोर वेबसाइट्स, बिकॉज ना जैसे द डे यू टेल मी दैट मेरे को ऑटोमेशन से आ गया है काम करना, प्ले करना, द डे यू टेल मी कि मैं सोशल मीडिया में एक क्लिक ऑफ बटन से कर सकती हूँ, मैं आपको और बिजनेस आके दूंगा. आई नो दैट वेरी वेल. आराम से मैं 2-3 डॉक्टर्स को बोलूँ, वो मेरे को ऐसे दे देंगे अपनी वेबसाइट. आई नो दैट. डॉक्टर्स हो गए, 2-3 बिजनेसेस है, मैं जानता हूँ उनको, वो दे देंगे. बट आई ऑल्सो नो योर कैपेसिटी, आई ऑल्सो नो कि हमें एक ब्लॉग राइटर नहीं लिखना है. बट इफ यू कैन टेक एडवांटेज, देखो हमने एलएलएम यूज किया है, हमने रिसर्च कराने के लिए डेटा फिर ऐसे यूज किया, तो हमने एक ही पे रिलाई नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ चैट जीपीटी को बोल दिया ब्लॉग लिख दो. नहीं, हमने डेटा फिर एसईओ को लिखा, फिर उसने रैंकिंग की, उसने कीवर्ड्स को लेके, फिर उसने इटरेट किया, फिर उसके ऊपर ब्लॉग लिखा, फिर एक इमेज जनरेट की, फिर वर्डप्रेस पे डाला, फिर उसी को हमने फिर एक सोशल मीडिया पे डाला. तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हमने एक ऑटोमेशन बनाया है. बट इसको अभी कैसे रिफाइन करना, आई लीव इट अप टू यू. हाउ डू यू डू दिस? हुँ। और एक वो स्टार्टिंग वाला पॉइंट जिसमें हम मैनुअली कीवर्ड डाल रहे हैं, तो वो भी एक रिसर्च का पार्ट रह जाएगा। अगर ऐसा होता है कि हाँ, कीवर्ड ऑटोमैटिकली जनरेट हो जाते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। वो स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ पे वो कह रहा था कि कीवर्ड हम अपने आप से डाल रहे हैं। तो अभी तो मैंने सॉरी, मेरा गला थोड़ा डेटा बहुत फॉर बैठा हुआ एसईओ पे मैंने है। एपीआई यूज किया, तो उसमें मैन्युअली डाला है उसने. बट आई बिलीव इसको मैं बाद में, यू सजेस्ट क्या करना है, यू लेट मी नो कहाँ से लाना है. हुँ। गेट इट फ्रॉम लाइक नॉट स्क्रैपी, बट देयर आर अदर टूल्स. आप सजेस्ट करो क्या इंटीग्रेट हाँ, कर सकते हैं. कीवर्ड जनरेशन टूल हम कोई यूज़ कर हाँ, सकते हैं। इफ यू टेल मी तो वो मॉड्यूल ऐड करा देंगे, उसको पे करके मैं बोलूंगा मॉड्यूल ऐड कर दो, वहां से वो डेटा पिक करेगा, इधर पास ऑन करेगा, इटरेट करेगा, सब करेगा. सो हमारा काम और इजी हो जाएगा. अभी हाँ, तो मैनुअल वो है ना. फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें सिर्फ़ हमें इतना ही करना है कि एक कीवर्ड जनरेशन का जो टूल होता है वो हमको बाय करके इंटीग्रेट कराना है। वो जैसे ही इंटीग्रेट होगा वो अपने आप ही कीवर्ड चूज़ करेगा और फिर वो आगे उसे बढ़ा देगा जिसमें वो कीवर्ड रिफाइन कर रहा है। तो वो पार्ट वहाँ से ऐड हो जाएगा। मेरे को नानी का बेडरूम दिख रहा है ऐसे. अच्छा. कब अ, करना है फिर ये? हाँ, बट कब शिवांगी, स्टार्ट यू करना है? स्टार्ट. आई मीन, हाउ यू प्लेस्ड अभी? व्हेन इज ड्यू डेट बाय द वे? अभी तो 6th में है वैसे तो। बट अप्रैल लास्ट तक हाँ, सोच रही हूँ। अप्रैल एंड ही होगा वो। हुँ। ओके, ओके. सो देखो, इफ यू कैन इसमें थोड़ा सा करो, बिकॉज आई नो फॉर अ टेकी पर्सन दिस विल गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ अ थिंग टू प्ले विद. अच्छा लगेगा यू हुँ। प्ले विद दैट ना. काफी यूनिक चीज कर रहे हैं हम. देखो, कोई नहीं करता है, बहुत कम लोग कर रहे हैं. सो यू हाँ। आर वन ऑफ द फ्यू पीपल विल बी डूइंग समथिंग. इसको और इंटेलिजेंट बनाओ, बेटर करो, ऑटोमेट करो. बजट की चिंता मत करो, आई इंटीग्रेट. आप देखो कि make.com में हम क्या फीड कर सकते हैं, वो मॉड्यूल में ऐड करवाऊंगा माइक से. इसको और रिफाइन करेंगे. इमेज प्रॉम्प्ट जनरेशन का आप बताओ अगर ठीक से नहीं हो रहा है तो. और सेम थिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि हम सैफ को नहीं, सॉरी, खन्ना को लें या प्रतीक को लें. फिगर हाँ। दैट आउट प्लीज. या कोई और इंडिपेंडेंटली बाहर से मिल रहा है आपको, कोई है आप पहचान वाला, उसको ले लो. बट वी नीड टू स्टार्ट डूइंग दैट. मेरे वेबसाइट भी मैं हैंड ओवर कर देता हूँ आपको कल परसों से. उसका जो आपने कहा था ना वेबसाइट के लिए, तो उसमें जो आपने सर्वर ऑलरेडी ले रखा है अंकिता, जो तुमने मुझे लॉगिन भेजा था, जो सैफ ने आई थिंक परचेज़ किया था ना सर्वर उनके लिए, तो उस सर्वर पे सब सारी वेबसाइट शिफ्ट करनी है ना? हाँ. हुँ। वो उस पे करनी है। हाँ, तो एक तो सर्वर का लॉगिन तो है मेरे पास। मतलब इन केस अभी डेवलपर आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो भी हो रहा है, मैं कल से खुद उस पे देखती हूँ एक बार कि कैसे करना है। तो एक तो ना वेबसाइट्स का लॉगिन चाहिए होगा मेरे को, वो सारी वेबसाइट्स का ना। वो सर्वर मैं का तो दिला है दूँगी। मेरे पास। हाँ।
उन वेबसाइट्स का, तो हम उसको उस पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है? एक मेन काम यही है। और दूसरा बस मेन काम अभी तो सबसे पहले जो मुझे लग रहा है वो यही लग रहा है कि हमारी वेबसाइट शिफ्ट हो जाए उनके ओरिजिनल उस पे, डोमेन पे, ताकि हम उनको दिखा पाएँ और उनके सारे ब्लॉग्स इम्पोर्ट करके यार उनको ऐसा लगे ना कि हाँ, मतलब काम हुआ है, मतलब इन्होंने अपने आप से, मतलब हम्म, बिना हमसे पूछे या वो अपने आप भी वेबसाइट अपडेट करी है। तो थोड़ा-सा वो करेक्ट लगता है यार कि हाँ, ठीक है। करेक्ट करेक्ट ठीक करेक्ट है। करेक्ट 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 यस ये रिपोर्ट का कोई भी पॉइंट उनको समझ में आएगा नहीं तब तक जब तक हम उनको दिखाएँगे नहीं, ये बात है। हुँ, ओके तो आज देखते हैं अंकिता, कुछ फाइनल करते हैं यार इस टॉपिक पे ना। ठीक है। हाँ चलो वेबसाइट ठीक या है सर्वर का तो मैं एक बार के लिए देख सकती हूँ, हाँ लेकिन वो वाली चीज़ है ना कि थोड़ा-सा जहाँ पे मैं अटक रही हूँ, उसको शिफ्ट करने वाली चीज़ पे यार देखो, देख के मैं भी कर सकती हूँ। मैं ये चाह रही हूँ ना कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब उसकी हेल्प रहे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ गलती से मिस हो जाए डाटा या कुछ हो जाए तो वो मेहनत खराब हो जाएगी, वो वाली तो बात है। एक काम करूँ इफ यू नॉट एबल टू फाइंड समवन इन द नेक्स्ट डे और सो लेट मी नो मैं किसी और को पूछता हूँ जो आई एम वर्किंग विद समवन एल्स फॉर सम अदर वेबसाइट वो बंदा खुद लीड जनरेट करके दे रहा है क्लिनिक्स को और हुँ, लाइक ही इज डन अ गुड जॉब उसने लाइक डॉक्टर मोहित सरोगी आई डोंट नो इफ यू नो दिस डॉक्टर इन बॉम्बे उसके टीम को उसने कल परसों में इतने लीड जनरेट किए कि मेरे को डॉक्टर मोहित का फोन आया है बोल के कि ये हमारे लिए फुल टाइम काम कर सकता है क्या ये बंदा आई सेड अच्छा। लाइक हाँ मतलब आई डोंट नो विनीत दिस गाय नो ही इज वर्क फॉर सार्थक बख्शी और फिर उसके हुँ, साथ हुँ, उसका कुछ हुँ। हो गया था प्रॉब्लम हो गया था तो ही इज वर्किंग अच्छा, फ्रॉम जिससे आप भी लीड जनरेट करवा रहे थे फॉर डॉक्टर श्रीलता? नहीं दैट वाज थ्रू मैं किसके लिए कर रहा था हाँ ये नहीं नहीं, उसका कोई दूसरा उसका एक उसी का काउंटर पार्ट था बट वो पेड था अच्छा, इंस्टाग्राम पे करके मैं कर रहा था पे पर क्लिक के लिए इसमें तो ये बंदे ने अच्छा। पता नहीं कैसा क्या क्या यूज किया ऑप्टिमाइज करके या लैंडिंग पेज बना के जो भी करके किया है बट ही इज गेटिंग हुँ, एक्सेलेंट लीड्स मतलब सो मतलब एक सैटरडे और मंडे के बीच में 9 लीड्स दिए उसमें से एक केस कन्वर्ट आज हुआ है मतलब it's not bad, you know, like 10% conversion is not bad in the IVF business at all. And that too for someone sitting in हुँ, Delhi और फिर उनके क्लिनिक में करके देखे बहुत अच्छा मतलब उनके डॉक्टर्स ने भी अप्रिशिएट किया कि लाइक वेरी गुड एक दिन में इतना अच्छा है तो ही नोज व्हाट इज डूइंग आई एम सेइंग कि उसका अगर आपको इंटीग्रेट करना है उसका नॉलेज या उसके थ्रू किसी हुँ, डेवलपर से बात करना तो मैं आई विल पुट यू इन टच विद हिम so you can utilize his services ओके। तो ठीक है वो हो गया बाकी एनीथिंग एल्स आई थिंक डॉक्टर श्रीलता का मेरे को कॉल आया था वही शी इज ट्राइंग टू गेट द गूगल माई बिजनेस थिंग रनिंग थ्रू समथिंग और द अदर हाँ, कुछ ट्राई कर रही हैं बट यार वो ही हो जाता ना कि आई डोंट नो वेयर इट इज गेटिंग स्टक आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस एट ऑल सो वही आई उनका आईपी डोमेन का इश्यू है, वो मैंने उनको समझाया भी था। फिर वो ना मुझे कह रही थी प्रिया कि आप मेरे को इसका, मैंने कहा यार वेबसाइट में जो सर्वर पे जनरेट होती है ना जीमेल, वो जीमेल नहीं होती है, वो बैकएंड से क्रिएट होती है। तो आप उस पे जीएमडी नहीं बनवा सकते। मैंने उसको एक्सप्लेन किया था पूरा। फिर मैंने बोला कि आपका कोई वर्क स्पेस हो, गूगल जी सूट हो, कुछ भी हो, आप किसी से भी क्रिएट कर सकते हो, किसी भी जीमेल आईडी से। तो फिर उनका मैसेज आया था कि ओके गॉट इट। तो आई थिंक मैंने कहा आपकी खुद की ईमेल आईडी हो सकती है, डॉक्टर की ईमेल आईडी, किसी की भी हो सकती है। चल यार वो उनका ना हिस्ट्री है आईपी कांस्टेंट है मेरे को लग रहा है। ओके ठीक है आई मीन मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है बट एनीवे आई विल स्पीक टू हर अगेन दिस वीक लेट्स सी इफ आई कैन रीजनरेट मैं उनका इंस्टा शुरू कर देता हूँ फिर से दैट इज द बेस्ट थिंग आई कैन डू हुँ। फॉर हर एटलीस्ट उनको वो एक शॉर्ट टर्म में लीड्स आने लगेंगी बिकॉज ऑर्गेनिक एसईओ से आना इज बिग आस्क स्पेशली अभी दुबई में जो चल रहा कौन जाएगा बताओ ट्रीटमेंट कराने के लिए हाँ, ये तो और उनके लिए फिर दिक्कत वाली बात हो गई। बिल्कुल 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 हाँ 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 ठीक है एनीवे चलो देन दैट्स गुड so far so good शुभांगी just play with this please and let me know what you think in a day or two ब्लॉग्स जब चेक करो येस, आप येस। क्या लग रहा है हुँ। and, कितने वर्ड्स मैंने उनको बोला कि 500 या 800 वर्ड्स बनाओ ब्लॉग का हाँ। प्लेसमेंट इमेजेस का क्या एक्यूरेसी करना तो इसको हम हायर करके बिकॉज अभी इसको पता है इस वीक में रिफाइन करना है क्या नहीं करना क्या ऐड करना है डेटा ऑफ एसईओ के पहले हम क्या फीड करा सकते हैं वो सब आप देख लो हाँ, उसने वर्ड काउंट का कमांड दिया था उसमें, मैंने देखा था। देखा था ना हाँ उसमें हुँ। वर्ड काउंट का तो जस्ट स्टडी दैट उसमें एरेज क्या है पैरामीटर्स क्या डालें आई एम श्योर यू आर टेक्निकली वेरी गुड एट ऑल दिस हुँ। तो आप स्टडी कर लो उसको और डू यू नो एनीवन हु इज ओके, गुड एट मैं आपको बता दूँ। लाइक इज सैफ गुड एट दिस make.com या इज प्रतीक नॉट सैफ सॉरी प्रतीक या for that matter Khanna are these guys have they worked on make.com automation नो, आई थिंक उन्होंने सुना भी नहीं होगा मेक.com के बारे में। इट्स नॉट जो रिलेटेड टू देयर हाँ, वर्क। वर्क ना। ठीक है so anyway we are ahead of the game let's just keep the tempo
let's do something that Hmm. no one is doing it. Hopefully it'll help us in the business. Okay. ठीक है, चलो, okay, bye everyone. Okay then. Bye bye. Good Bye night. bye, good night.